Okay, students, come to another example. Electricity consumption for household. So basically, it is the month-wise electricity consumption of one's house, and month-wise the number of units of electric units consumed are given here for January, February, March, April. Look at the April, March. In March, the total number of units consumed are 370, but in April, 883, May, 985, June, 452. So if you look at these 3 months, so noted that in our vicinity, the temperature in these 3 months is quite higher. So that's why the utilization of fans, lights, air conditions, and some other electrical equipment will be higher as compared to the other months. You see the decline in July, then further decline 380 in August, and September, October, as soon as you see the monsoon seasons and then winter season, you see that there is a decline in the electricity units. So what we need to get from this data? So let's draw these values on the number line. So once again, look at the data. This is the report of 12 months electrically consumption units for households. But three of the values, no, not three, two values are the prominent values, and these two prominent values are, one is the 883 and second is the 985. So these are quite higher values. The other values are nearer to 300 something. If I wish to plot them on the number line, then what happens? So I draw these values on the number line. Please compute the arithmetic mean for these 12 values. So please hurry up. Please compute the arithmetic mean for these values. And these two prominent values are, one is the 883 and second is the 985. So these are quite higher values. The other values are nearer to 300 something. If I wish to plot them on the number line, then what happens? So I draw these values on the number line. Please compute the arithmetic mean for these 12 values. So please hurry up. Please compute the arithmetic mean for these values. Hurry up, students. Okay, please respond me in the chat box. Okay, write down in the chat box.
Okay, Abru informs that 457.1. Okay, in my opinion, that is 459.66. That is approximately 460. Okay, okay. As I plot all these values on the number line, I see that mean lies here, 460, and there are two extreme values. These are some abnormalities, or we call them outliers, because these two values, 883 and 985, these two values quite far away from the all the other 10 values. Now, what is your opinion? That is arithmetic mean is the best representative of that data, because arithmetic mean means that it always lies in the center of the data. So can you say that arithmetic mean is the best representative for that data? Because mean does not lies in the center of the data. So that means here mean does not provide the accurate information. It basically this in this problem we are misleading after calculating the mean compute करने से हमें कोई बेहतर रिजल्ट नहीं मिला, हम मिसलीड हो रहे हैं. ठीक है जी. Okay, what is the average consumption for this data? So average consumption for this data is 460, but that is not the accurate information about the data. अच्छा, मैंने एवरेज भी लिख दी, इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन भी लिख दिया है, बट इट डज नॉट इंडिकेट प्रॉपरली द मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी. उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि ये जो हमारा मीन आ रहा है वो डाटा के सेंटर में लाई नहीं कर रहा. ठीक है, ये थोड़ा सा लेफ्ट पे लाई कर रहा है. उसकी वजह क्या? ड्यू टू दीज टू आउटलायर्स. इन दो आउटलायर्स की मदद से डिस्कार्ड दीज टू आउटलायर्स. अगर हम इन दो आउटलायर्स को डिस्कार्ड कर देते हैं, देन वी गेट टोटल 10 वैल्यूज. हमारे पास टोटल 10 वैल्यूज रह जाएंगी, और इन 10 वैल्यूज का एवरेज कितना आ जाएगा हमारे पास? 364.8 यानी कि 365, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी रिड्यूस होके 39 पे आ गया. आप देख सकते हैं कि जी एवरेज इन दो वैल्यूज को डिस्कार्ड करने से एवरेज पर तो इतना फर्क नहीं पड़ा, बट यू सी ए मेजर चेंज इन द स्टैंडर्ड डेविएशन. आप मेजर चेंज देख रहे हैं इनके स्टैंडर्ड डेविएशन पे. उसकी क्या रीज़न है, ज़रा देखिएगा जी. अब इस नंबर लाइन को देखें जो यहाँ पर है, और ऊपर वाली नंबर लाइन को देखें. ये थे 300 से लेकर 1000 तक. अब मैंने 883 भी डिस्कार्ड कर दिया और 985 भी डिस्कार्ड कर दिया. अब मेरे पास सारी वैल्यूज 300 की लाइंस में है और 400 की लाइंस में कुछ वैल्यूज हैं. अब मेरा डाटा जो है वो 300 से लेकर 500 तक रह जाएगा, यानी माई डाटा विल बी स्क्यूज्ड, श्रिंक्ड. ये सारी लाइन जो है मेरे पास तो एक्स्ट्रा हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास अब आउटलायर्स कोई नहीं है. मैंने आउटलायर्स को तो मैंने डिलीट कर दिया. दैट्स वाई माई नंबर लाइन विल बी स्क्यूज्ड, कम होगी, रिड्यूस होगी. अब नंबर लाइन रिड्यूस हो गई और मीन है 365. मीन कहीं यहाँ पे लाई करेगा. मैं कह रहा हूँ दिस इज 300, 350, 400, 450, 500. नाउ इट नाउ दैट मीन beautifully depict the measure of central tendency or the idea of the measure of central tendency. ये मीन आपको वाकई बता रहा है कि हाँ जी मैं वाकई जो है सेंटर में लाई कर रहा हूँ. लेकिन इससे ऊपर देखें तो ये इसकी बेस्ट पिक्चर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था. उसकी वजह क्या है? ड्यू टू दीज टू आउटलायर्स 883 एंड 985. तो क्योंकि ज़्यादातर वैल्यूज जो है ना वो क्लस्टर्ड यहाँ पे हो रही है, तो अगर मैं इसको देखूँ भी तो यहाँ पे मीन जो था हमारे पास वो इस क्लस्टर से बाहर जा रहा था. बट इफ वी डिस्कार्ड दी टू आउटलायर्स, सो अरिथमेटिक मीन इज द अप्रोप्रिएट एवरेज, या वो डाटा को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है. ये इस तरह से भी हो सकता है कि ड्यू टू अब दैट इंफॉर्मेशन इज यूजफुल for the electrically consumption month wise. Means how to optimally
reduce the electrical consumption, कि जो आउटलायर्स हैं उनकी नौबत ना आए, आप किसी तरह से इन 2 या 3 महीनों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है ना उसको रिड्यूस करें बाय इम्प्रूविंग सम फैक्टर्स। आप कुछ फैक्टर्स इसमें और ऐड कर दें, या इस तरह से कही तो होता है ना कि जी हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को रिड्यूस करना चाह रहे हैं कि किस तरह से हम बिजली कम से कम यूज़ करें। वन ऑफ द वे इज दैट लाइक the air condition manufacturing companies are very in कि जी आप इन्वर्टर ले लें as compared to the simple air condition. Use the inverter and that inverter reduces the electrically consumption in a quite effective mode. तो उस वजह से मे बी ये जो अप्रैल और मई और जून की बिलिंग में जो इलेक्ट्रिक यूनिट्स आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं वो ज़रा रिड्यूस हो जाए, एंड स्विच टू कन्वर्ट ऑल योर लाइट्स ऑन एलईडी लाइट्स, आप एलईडी लाइट्स पे चले जाएं ताकि जो यूनिट्स आप यूज़ कर रहे हैं वो कम से कम यूज़ हो, एंड ट्राई टू मिनिमाइज the usage of electric units between 6 to 10 PM, यानी 6 से 10 बजे के दरमियान, शाम 6 से रात 10 बजे, या 5 शाम के 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आप जो है वो यूनिट्स जो है वो कम से कम यूटिलाइज करें। और एक और वे ये भी है कि यूज़ द प्रॉपर गेज वायर, कॉपर गेज वायर, आपकी जो वायर हो वो आप प्रॉपर यूज़ करें। जो वायर अगर प्रॉपर नहीं है और प्रॉपर गेज की नहीं है और कॉपर वायर नहीं है तो तब भी जो है यूनिट्स जो है वो ज़्यादा कंज्यूम हो सकते हैं। तो ये तो काफ़ी हॉट टॉपिक है जी, किस तरह से जो है अपने जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है इसको हम जो है मिनिमाइज करें एंड टू गेट दी मैक्सिमम बेनिफिट्स। So here mean average lies in the center and indicate about the measure of central tendency. So mean lies between the cluster of the data, so better for the measure of variation as compared to the previous data. तो यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जी मीन जो है वो डाटा के क्लस्टर में लाई करता है, तो इसलिए मेजर ऑफ वेरिएशन जो है यहाँ बेहतर है एज कंपेयर टू द प्रीवियस डाटा जिसके अंदर कुछ हमें जो है आउटलायर्स नज़र आ रहे थे। कई दफ़ा ये भी होता है कि हम इन आउटलायर्स को एडजस्ट करते हैं। हाउ टू एडजस्ट दीज आउटलायर्स, एडजस्ट का मतलब ये होगा कि अपने रिसोर्सेज को हमने किस तरह से बेटरली यूज़ करना है। So that is one of the part. Okay, when we have outliers in the data, best to find median for the measure of central tendency. So this is another information कि जब भी हमारे पास outliers हो data में, the better to use median for the measure of central tendency rather to choose the measure of central tendency. So for the abrupt problem of electricity consumption, we rearrange the data, हमने अपने data को rearrange किया and compute the median. Since these are the 12 values, so median will be the average of two middle values, 362 and 370. इनका median, इनका average होगा, and that will be 366. वो हमारे पास 366 आ गया. So where the 366 lies? Okay, 366 और mean हमारे पास क्या आया था उसको देखते हैं ज़रा। mean हमारे पास 365 आया था और उससे पहले 460 आया था। जब आउटलायर्स को यूज़ करते हुए हमने मीन कंप्यूट किया तो 460 था, और जब आउटलायर्स को रिमूव करके मीन कंप्यूट किया तो 365 था। अब अगर हम अरिथमेटिक मीन की बजाय हम मीडियन यूज़ करें तो तब हमारा एवरेज, हमारा मेजर सेंट्रल टेंडेंसी क्या होगा? 366। आप देख सकते हैं ये हमारे प्रीवियस मीन के साथ जो है वो काफ़ी कंपेटिबल है, उसके क्लोजेस्ट है, एंड दैट डिपिक्ट्स द ट्रू पिक्चर कि एवरेज, that average which is named as median lies in the center of these 10 values. No doubt there are two outliers which are quite far away to the right side.
So whenever you see some outliers in the data, so better to choose median as the measure of central tendency. So median is appropriate.